Good morning, students. Today we will discuss about electricity and lightning. Before starting this, first we take example. When you take off a nylon sweater or pull off nylon socks, there is often a crackling sound or produced when you even see sparks. देखिए, जब आप नायलॉन की सॉक्स या स्वेटर उतारते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो स्पार्किंग जैसे बिजली की दो वायर से कॉन्टैक्ट कर स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, उस टाइप से साउंड प्रोड्यूस होती है. दिस साउंड एंड स्पार्क्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. नाउ हेयर व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो साउंड और स्पार्क्स है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. नाउ हेयर व्हाट, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से? वेयर इट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आई इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई, कहाँ से स्पार्किंग हुई इसमें. ठीक है. इट अपीयर्स बाय रबिंग ऑफ दीज क्लॉथ्स विद आवर स्किन. अब ये जो क्लॉथ्स की रबिंग हुई हमारी स्किन से, उससे स्पार्किंग हुई और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एम्बर इज रब्ड विद सिल्क इट कैन अटैक टेनी फेदर्स. एम्बर मीन्स जैसे वन टाइप ऑफ रेजिन और लिक्विड दैट रिलीज फ्रॉम ट्री. नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग रबिंग. देखिए, अब जब उन्हें स्पार्किंग और लाइट प्रोड्यूस हुई तो रबिंग, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग रबिंग. रबिंग के दौरान क्या हुआ? बाय रबिंग चार्ज प्रोड्यूस. रबिंग के दौरान चार्ज प्रोड्यूस हुआ. बट हाउ चार्ज प्रोड्यूस एंड वाई चार्ज प्रोड्यूस? ओके. बाय रबिंग ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रबिंग. ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मीन्स वन बॉडी लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर बॉडी बाय विच इट इज रब्ड गेन इलेक्ट्रॉन. ड्यूरिंग रबिंग विच लॉस. अब नाउ ड्यूरिंग रबिंग विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स. देखिए, अब जो बॉडी लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें जाएंगे जिससे वो रब हो रही है, दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ओके. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. अभी ड्यूरिंग रबिंग, दिस प्रोसेस मीन ड्यूरिंग रबिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. Static means which are at rest, which are fixed, which are constant, known as electrostatic. Electricity, static means rest, fixed. For example, when comb is rubbed with dry hair, it takes small bits of paper. Means जब comb को dry hair में आप rub करोगे, then it attacks small bits of paper. Like when I rub seal this pen into dry hair, इट विल टेक दिस पेपर्स. ओके. देखिए, जैसे पेपर को टच किया इसने, इसको टच किया इसने. ठीक है. नाउ कॉम एंड पेपर बिट्स है पोपोज. अब देखिए, कॉम एंड पेपर बिट्स, जो कॉम और पेपर के टुकड़े थे आपस में अट्रैक्ट हुए. वाई? बिकॉज दीज आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. दीज आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. Now our question that why electrons are transferred during rubbing. Now our question, why only electrons are transferred? Why protons and neutrons are not transferred? Because electrons are outside the nucleus. Outside nucleus means in protons are and neutrons are bound in the nucleus, but electrons are outside the nucleus. Here see, electrons are outside the nucleus, so electrons are transferred. Okay. Now next page. Here see this diagram. Here you see this is atom. In this, protons positive, neutrons no charge, and electrons are around this nucleus. Here positive charge is on proton and negative charge on electrons, and neutrons have no charge. This show neutrons no charge. Now in any atom, protons and electrons are equal. In any atom, all matter are made up of atoms, but all atoms having protons and protons electrons are equal. For example, take example here. If any atom have 8 protons and 8 electrons, means 8 proton means plus 8 charge and 8 electron means minus 8 charge, that is plus 8 minus that is equal to 0. It means they balance each other, so atom is electrically neutral. इसलिए atom क्या है? एटम पे ऑल ओवर टोटली उस पर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज टोटली न्यूट्रल. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एज वी रीड इन लोअर क्लासेस दैट सेम चार्ज इज
repel each other, like minus minus repel each other, and plus plus also same charges that repel each other. Now plus and minus, they attract each other. These show attraction. These are opposite charges. This is plus and this is minus. These are having same charges. In these repulsion, same charges. In the attraction, opposite charges, plus and minus. Okay. Now what is electrostatic force? Means the force by which these charges, opposite charges, attract each other or same charges repel each other. This force is known as electrostatic force. As we see here, the same charges plus plus and minus minus repel each other, दूर धकेलते हैं वो, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में एक दूसरा अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं वो. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी डिफाइंड एज दी फोर्स बाय विच वन चार्ज अट्रैक्ट, और मतलब कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मीन्स अट्रैक्ट और रिपेल बाय विच फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. That is our topic of electricity and lightning. Next topic we more discuss about this chapter. Thank you. Have a nice day.